Sesisian fat ingin penbenai kini Satan lalu fikwa ke jingsuk aka yeng ke jongfi lalu fikwa ke jingsuk aka senang ke jongfi tong ini rai kam jam biang sesisian kini ke jingrai ingin ingin pertang ingin kini ke notice Satan sesisian fat ingin rai kini ke jingrai sukata ke yeng ke bau try along the play sukata ke yeng rai kam jam sukata ke yeng ke bau try along the play sukata ke yeng kini Satan sukata ke yeng ke bau try along the play sukata ke yeng sukata ke yeng ke bau try along the play dan gua ke jingsuk aka senang jofi rai kam jam yang kini sukata ke senang ke bau try along the play sukata ke senang sukata ke senang ke bau try along the play sukata ke senang sukata ke senang ke bau try along the play sukata ke senang sukata ke senang ke bau try along the play Jinga ye John me coming in yana try jinga ye John me coming in yana
सो इससे मैं कुछ बात करना चाहूंगा आपसे। kwa ban kren e ya fi khindian सो यीशु मसीह ने पहला चमत्कार किया। ke ek bo trau la le ka kamba सो इसे क्यों चमत्कार किया यीशु मसीह ने वहां पर, ble trau la le ek ni ka kamba और इसे क्यों उसे बुलाया गया था, namar la khot ya u और इसलिए परमेश्वर ने आप लोगों को बुलाया। bo trau la khot ya phi और इसलिए किस लिए बुलाया, ble bo la khot ya phi ताकि आप आशीष को पा सके। nang ba fin yo ma de ka jingkur khu सो इसलिए बाइबल बताती है यहाँ पर, ba ka tien ka jong ble hang ne ko ong और इससे कहता है कि यीशु मसीह ने पहला चमत्कार किया। but ke ek ba ka kamba bo ka baning kong bo trau la le और यीशु मसीह को एक शादी पे बुलाया गया, bo ye la khot yu trai jisu shak ta ka jing tho song और इससे पहला चमत्कार यीशु मसीह ने किया। but ke ne ke ka kamba ka baning kong bo la le और इससे परमेश्वर ने आपको भी बुलाया यहाँ पर, bo trau la khot ya phi ek ne jaka ताकि आपके जीवन में भी चमत्कार हो सके, चंगाई हो सके। khnang ba fin yo ma de ka kamba ka jing em ka jong तो इससे बाइबल बताती है यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह को एक शादी पे बुलाया गया। aka tien ka jong ble ne la tho bo trai jisu la khot yu shak ta ka jing khawai song और इससे जब यीशु मसीह आएंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, ba bo trai jisu lawan shak ta ka jaka और इससे बाइबल बताती है यीशु मसीह आने वाले हैं, ba hang ne ka bible ko ong bo trai lawan और इससे आएंगे, यीशु मसीह आएंगे, bo trai jisu lawan और इससे आएंगे तो हम यीशु के साथ स्वर्ग में जाएंगे। ba ha bo trai jisu unwan ngirungen le lang bat u shbeneng और यीशु मसीह को यहाँ पर शादी पे बुलाया गया, ba ha ne wi pet bo trai jisu la khot shak ta ka jing khawai song और इससे उसके माँ के साथ में, ba ka dan ka kme ka jong uru angta उनके चेलों के साथ में, ba dan nang ki senran ki jong u और इससे सभी लोग अच्छे वस्त्र पहन के आए होंगे वहाँ पर। lawan phong de ki jan ki ba itnat shak ta ka jing और khawai इससे उस शादी में क्या हो गया, ba la ja ayu ka ta ka jing khawai वहाँ song में दाख रस खत्म हो गए। hang ta ka ta ka wain ka la lut no और इसलिए आज भी संसार के लोग हम देखते हैं, ba ha ba shisang i pe yak ni sngiru और वो बोलते हैं क्या कि यीशु मसीह ने शराब को बनाया, biki ong ba utrai jisu usna ya ka kiat और इसलिए लोग शराब को पीते हैं। kumta ki bri glass dang mane di मैं भी ऐसा ही था, ngaru men shuang along kumta जब लोग बोलते थे मुझे क्यों शराब पीते हो, but ki bri jukli ya i pastor beling es me ngi di kiat और इससे मैं कहता यीशु मसीह ने शराब को बनाया। but iju ong ba utrai jisu la stau ya ta ka kiat सो इसलिए मेरे प्यारे बहनों, मैं उस समय बाइबल को नहीं जानता था, hakata ka por ma i impaction la tip ya ka bible और इससे संसार के लोग भी अभी बाइबल को नहीं जानते हैं। but si bon si sha ki bri jong ka perthai kim tip ya ka tien ke jong blai लोग कहते हैं हम क्रिश्चियन हैं, ki bri ki ong ba ki de ki kristan नाम के लिए क्रिश्चियन है केवल, blai ki shulong kristan tang ka nam और इससे नाम के लिए जो क्रिश्चियन है, मैं भी पहले ऐसा था, but iru men shuai julong kumta मैं भी शराब पीता था सुबह से लेकर, iru men shuai judi kiat na do dang stem और इसे रात तक पीता था बहुत। ba judi hado banda men और इसे जब कोई पूछते से मैं कहता यीशु ने शराब को बनाया। but lari ki bri ki kli iju bab kumta ba kadai ba utrai jisu usna और इससे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग सुन रहे हैं, घर में हैं या दुकान में हैं, ban ngakwa ban ong kene ka wai kita ki badan ki yeng bada ki dukan और यीशु मसीह ने शराब को नहीं बनाया, क्या है, दाखरस को बनाया है। utrai jisu umlash nai ka kiat reulash snai ka wine और इससे उसने क्या बनाया, फलों के रस का वो जूस बनाया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, but ya ta ka wine la shna na kini ki so jong ki so grape और इससे लोग यहाँ पर अंग्रेजी में लिखा है कि यीशु मसीह ने शराब को बनाया। ndre ha ka tien ko jong blai la tho ba la utrai jisu la pen ka la wine और इसे अगर हम हिंदी बाइबल में पढ़ेंगे, अच्छे से लिखा गया वहाँ पर, but ha ka tien hindi ha bible ko ong उसे दाखरस को बनाया। la snai ka wine और इससे मैं भी बहुत शराब पीता था, मैंने बताया आपको, ngala ong pi ba i pastor ong ashi di kiat bhaman shu और इससे जब मेरा जीवन कैसे बचा, kumno ba ila yo e jing pen em और इससे जब मैं शराब पी के घर में आता था, ha ila judi kiat ben let pat shi ye और इससे मेरी पत्नी but i lok jong i और मेरी माँ but i kime jong i मेरे ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करती ki थी। bokti i banduai और इससे मैं आपको बताना चाहता हूँ, ban ngakwa ba in ban ong ye fi ko wai आपके परिवार में भी हो सकता है ka yeng jong fi ru le se कोई सिगरेट पीता है, dan ki badi secret कोई ड्रग्स खाता है, dan ki badi drugs कोई शराब पीता है, dan ki badi kiat और इससे मेरे प्यारे बहनों, आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। ban nga ong ye fi ko ki man para kidai ki tang ka wai banduai और इससे बाइबल यहाँ पे बताती है, लिखा है कि यीशु मसीह शादी पर आए, but ha ka tien ko jong blai ko ong ba try jisu wan chak ta ka jing khaw और इससे अपनी माँ के साथ में आए, but ka kmi jong ur ko dan hang ta अपने चेलों के साथ में आए, but ki senran ru ki dan और इससे मेरे प्यारे बहनों, मैं बताना चाहता हूँ कि उसकी माता ने क्या कहा, but hang ne ko ban ong ye fi ba ka kmi ko jong jisu और इससे ये कहने लगी जाकर कि विवाह में क्या है, दाखरस खत्म हो गया। ka kmi jong u klali ong jisu ba kala lut ka ta ka wine और इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा,
Ba utrai Jisu ulo ong pat. कहता है मेरा समय अभी नहीं आया। Wang baka por ke jonga kam pat lapoi. और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, Ba ngakwa ban ong ye phi. और इतने साल से आप यहाँ पर है, इस गांव में हैं, Kata senam pila em ha kene ke snong. और इससे मेरे बहनों आप भी प्रार्थना करते होंगे, Ban nganget ba phiru phi juju. और यीशु मसीह कहते हैं मेरा समय अभी नहीं आया। Ba utrai Jisu ong baka por jonga kam pat dei. और इस शाम के समय में, Ba hakane ke janme. इस शाम के समय में मैं कहता हूँ वो समय यीशु मसीह आपके जीवन में लेके आया है। Bong hakane ke janme ngakwa ban ong ye phi ba ke jingwan jong phi hang ne ke jingwan ya lam jong trai. और इससे क्या करना पड़ेगा उसके लिए हमें Ba ke ke ba phi dan kam pan. हमें विश्वास योग्य होना पड़ेगा, फेथफुल। Ba phi dan kam tang ban long ke banget. और इससे परमेश्वर के साथ में जब आप विश्वास योग्य होंगे, Ba haba phi dan ke jinget ha utrai. और इससे उसकी माता ने क्या कहा, Ka kemi jong u ko ong. और उससे क्या कहा, चेलों को क्या कहा, Ba ulo ong ik ti senran. यीशु मसीह क्या कहते हैं, तुम लोग वो करो। Ke ke ba utrai Jisu ong man le. और इससे हम भी मसीह लोग हैं, हम भी क्रिश्चियन लोग हैं, Ba ngiru kum ki kon Kristan. और इससे हमें भी परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहिए। Ngiran kam man sha skore ke surg jong utrai. जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, Abang ngi asngo ke surg jong utrai. तब आप परमेश्वर आपके जीवन में आशीष करेगा। Ba hang ta fin mat ke jingker khu. और इससे तब जब आप विश्वास योग्य होंगे, Ba haba phi dan ke jinget. तो परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार Ba करेगा। hang ta fin i ke kamba. मेरे जीवन में चमत्कार हुआ, Ha ke jing em ke jong ngaro ngai mat ki kamba. मेरे जीवन को परमेश्वर ने चंगा किया, Ulo utrai ula pen khia enga. और इससे ताकि मैं परमेश्वर के वचन को बांट सकूं, Thanang bangan yo ban sam ning ke tien ke jong blai. और इससे परमेश्वर आपके जीवन में भी काम करेगा, Ban nganget ba utrai un sele kamba ke और jing इससे em आपको jong. विश्वास योग्य होना पड़ेगा। Ba phi dan kam tang ban ngen. और इससे आपको विश्वास योग्य कैसा होना पड़ेगा, Ba kum no ba phi fin ngen. आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है, Dei ling ba jong ke jing duai. आपको बाइबल पढ़ने की आवश्यकता है, Ling ba ba phi pulei ke tien ke jong blai. आपको संगति करने की आवश्यकता Dan है। kam ban mare ban yaro. इसलिए परमेश्वर, आप जब विश्वास योग्य होंगे तभी परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। Ba haba phi long shisha te ki break ki banget. Hang ta fin i ke kamba ke jong blai. और इससे चेलों के साथ में भी क्या हुआ यहाँ पर हम देखते हैं, Ba hang ning i kum no ke jai te ki senran. और ये चेलों ने भी यीशु मसीह की आवाज को सुना, Kini ki senran ro haba ki asngoi ke sur ke jong utrai. और यीशु मसीह ने क्या कहा, Ba utrai Jisu ong. और उस शादी में दाखरस खत्म हो गया, Aba la lut kita ka wai na ta ka jing yat. और यीशु मसीह ने कहा ये घरों में पानी को भर दो, Wong da pendap ha ta ki khiu da ka और इससे उन लोगों ने कुछ नहीं बोला, Bagi ta kim shim la ong ai. और चुपचाप पानी भरने लगे। Bat kum ta ki shulet bet ben pendap ta ki khiu. और इससे हमारा जीवन भी ऐसा होना चाहिए, Bat kum ta ka jing em ke jongir ke di ban long. हमें विश्वास योग्य करना पड़ेगा, Di ban long kita ki banget. और यीशु की आवाज को सुनना पड़ेगा। Di ban sha skore ke sur ke jong. जब यीशु की आवाज को सुनेंगे, Ba haba ngi asngoi ke sur ke jong trai. यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेगा। Trai Jisu sa trai ke jing em ke. Hands to your neighbors, left, right. Tengin ya ong ya roi utrai de wi khublei kti iwe pra marjanang tu. Yes, you can do much better than that. Come on. Oi to ong ya roi utrai de wi khublei kti lang. Praise the Lord. Ya roi utrai. Amen. Amen. Okay, you may be seated. Ta pila ban song man ta. I won't be taking much of time. I'll take just max to max 10 minutes Ganam shim shibon ka por kum batang 10 minute i ai. because we have to pray. Mangidan kam man ya duai lang. And we coming here is not an accident. Bagi jingwan hang ni ke jongi kam de ke besujar. And you coming here is not an accident. Bagi jingwan jong pi hang ni kam de ke besujaring. Coming to this place, warm up, but it's not an accident for us. It is God who sent us. Ke jingwan jongi hang ni kam de ke baga jaring khat ri bau trai. Amen. Pa yangi. Amen. Do you really love Jesus? Atau fi i chisai utrai. Do you really love Jesus? Atau fi i chisai utrai. This is the question God is asking this evening to you and to me. Uplay ke ni ke sngi ukli pi ke ni ke jingkli atau fi i chisai yanga. If you really love Jesus, your relationship will be intimate. Ayo shisha la da fi i chisai utrai kan don shisha ta ke jinga dei bajan batu. I want to take you to this book of Revelation chapter 2 verse 4 and 5. Aku akan jalan mepi nak jingpen pau ka linong ka baar ka dekat ka pasau ka pasan. Yet I hold this against you. You have forsaken the love you had at first. Consider how far you have fallen. Repent and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. Hendai ngadan kene ka persyak ya pa.
Bapala ino no ya gijing e jong pa ka baningkong. Tukin mau namar kata nang no bapala hak no. Bat tukala ka bamut. Bat tule ya kita gijing le ki baningkong. Lemda kum tangan wan kloi hapa ban ngan pen ken ria no giding peniang syarak jong pa na kejaka jong ka lada pam kala ka bamut. Do you know that God loves you so much? Atau fite bau try eat pelat dia pi. But the question is, are you loving Jesus or not? Dek gijing keli hang ne galang atau ba pi eat ne emu. Am I loving Jesus or not? Atau fite eat shisha ne emu try. And here the Bible says that repent. Hang ne kaktin ko jong play ko ang tu kala ka bamut. The love that you have for God, Kata gijing eat ka ba fidon you try. that you used to be on fire for God. Kata kapor kata gijing eat ka ba shit rahem. You used to pray. Mensual ese fishu duai. You used to read the Word of God. Fishu puli ka ktien ka jong play. You used to spend time being in His presence. Fishu dan ringkat u try ki kentai ki babon. And the Word of God says, repent. Get back to your first love. Ka ktien jong play ni ko ang tu kala ka bamut ban wan pai sa ta gijing eat ka baningkong. Have you forsaken your first love? Atau fila eat no ya ta gijing eat ka baningkong. Or are you still in that first love? Atau nale ni fidang don ni ta gijing eat. If you are in that first love, I give thumbs up. La fidang don ni ta gijing eat baningkong ngai jige ro ya pi. But somehow you have loose connection, somehow you have been far away from your first love, then you need to repent, my dear brothers and sisters. Rayo le si fila pai jingai no na ta gijing eat ka baningkong ka kre ka sngi fidan kaman kala ka bamut. God is calling us, Try khot yang ni. come back to that first love. Wan pai sa ta gijing eat ka baningkong. You know, God loves us so much. Kita utrai eat pelat yang ni. When He loves, His eyes is upon you. Berapa eat utrai kami shapi. He has never taken off His eyes from you. Untuk pai lendat pat napi. Had He taken off His eyes from you, you would not have been here. Lada utrai pai lendat napi film don na gani gejaka. He loves you so much. Utrai eat pelat ya pi. And where is your eyes now? Bar ki khmat jong pi chano pat ki khmi. Where are you fixing your eyes? Chano pat pi khmi di ki khmat ki jong. Are you fixing your eyes to this world? Atau fi khmi di ki khmat di gani ki ki ba jong gani ka pertai. Are you fixing your eyes to the money? Atau fi khmi di ki khmat jong fi ki long sha ka pisa. Are you fixing your eyes to the pleasures this world has to offer to you? Atau fi pe di ki jong gani ka pertai ba gani ka pertai ka terwa ya pi. If that is the case, Lada kalong kum ta. we need to turn away our eyes Bidan kaman pai pat na and ta. fix our eyes to Jesus. Baru ngin pet pat siya utrai Jisu. Because He said, come back. Mau utrai Jisu khot pat. Come back, my sons and daughters, the love that you have for me. Wan pai ko ki khon ki jonga ya ta jing eat ki ba fidon ni nga. If you read in 2 Timothy chapter 3 verse 1 following, Da fi pulin automatic ka ba ning kong ter hang tu finsyam. it says like this, Ka ong kum ni. but mark this, there will be a terrible time in the last days. Ba ki sngi ki ba khado ki nang ki sngi ki ba People will be lovers of themselves, Ki brio ki nang ki ba eat tang ya ladi. lover of Ki money, ba eat sbai. boastful, Ki ba sarong. proud, Ki abuse, ba sarong ki ba men. disobedient Ki ba bilang ki bam kongo. to the parents, Bam kongo ki kime ki pa. ungrateful and unholy. Kilang ki bam sngongo ba ki bam ko. This is what we are seeing in these last days. Ni isi siya ni kisngi ki ba khado ki. If you are in that list, if I'm in that list, Balagi dan hakata libenta. we need to come out of that Ginan kaman mi pat na kata. and we need to come back to our first love. Ginan kaman wan pat sa ta jing eat ke beningkong. How you used to be crazy for God, Dan ki por si siya long eat you to try do. that you always think for Jesus all the time. Ba fi berkat mi tang try bet man kapor. And the Bible says in James chapter 4 verse 4, Ba ka kitab jong Jacob saw ko ong. friendship with the world is enmity with God. Kajing lok bat ko pertai galang nong shun bat ublay. If we are loving so much, if we are so much attached with this worldly thing, La fi dan kajing ate si siya ba ki jong ni ka pertai. that means our love for God is not there. Kamot ang ta kajing eat ki jong ublay kam dan happy. Amen. Amen. We need to fix our eyes to Jesus, who is the author and finisher of our faith. Ginan kaman pet chu try Jisu bolong tau nong penlong bag ya kajing eat ke jongi. Hebrews chapter 12 verse 1, 2, if you read, Hebrew khat ar haba fi pule. fix your eyes to Jesus, Pet chu try Jisu. who is the author and finisher of your faith, of my faith. Bolong nong penlong monong penjana ya kajing eat ke jong fi. Amen.
Amen. Where is our eyes, my dear brothers and sisters? Sino kikmat jong ikipe. If you really love Jesus, your eyes will be always towards Him. Lada ki fi chi shau trai Jesu kikmat jong fi kin kmet tang shau. Oh, He loves you so much. Chi shau trai it palat dia pi. He wants to fill with that love this evening. Kuat man pendap fi dah ta jing it ta kini ke jan me. Are you searching your love in wrong source? Atau fi ai ke jing